कैसे हैं आप सब लोग? देखिए आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शुगफ्तारी और कैश में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस सो स्टे कनेक्ट विद मी। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना और गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं अबाउट का। Now we are going to create like this one. So यहाँ पर सबसे पहले हम एक सेक्शन बना लेते हैं, अबाउट रख लेते हैं, अबाउट सेक्शन रख लेते हैं, अबाउट सेक्शन, and I'm going to implement here again another padding. अभी इसको क्रिएट जो है पैडिंग की इम्प्लीमेंट लाइक दैट इस वेबसाइट हमने क्रिएट करी है सेम वैसे ही है. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट कंटेनर रो क्लास. तो यहाँ पर मैं एक और क्लास 10 दे रही हूँ. मार्जिन लेफ्ट कर देती हूँ एंड देन पैडिंग राइट इज 0. Move on, there is about provide guys any source code. तो आप लाजमी बता सकते हैं. Create here the row. After that we create another column. Merge 3 5. After that we are going to implement here the detail box. So inside this we are going to implement so we are another class. इसी के साथ guys we are going to create. तो यहाँ पर लिख देते हैं ओके. इसी के साथ गाइस हम h2 के बाद the 2 divs back from 1 div ऐसा. तो फिलहाल हम लॉरम एप्सिम का पैराग्राफ ले लेते हैं. के साथ इस पैराग्राफ के बाद we are going to create here the okay. After that we are going take here the anchor tag और anchor tag को फिलहाल हम अभी करेंगे और यहाँ पर हम एक मोड का बटन प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है जी, लाइक इन दिस वे. So here section अभी सी we're going to is a class section. तो इसमें some rules. So यहाँ section है वो class section. Create here the final look. So move on the CSS. So guys यहाँ padding को implement करेंगे. तो बॉटम में भी ओवरऑल है तो इसलिए मैं
So padding top is इसी के साथ साथ गए the next 120px. Okay, move on the next. इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं लेआउट पैडिंग 2 पे. ओके, मैं बना लेती हूँ, जब हम आगे जाके लेआउट पैडिंग 2 को गेट करेंगे. तो सिंपल पैडिंग रखते हैं हम यहाँ पर 45 and then 0. Move. Here is another layout. हम बॉटम क्रिएट कर लेंगे. पहले मैं क्रिएट कर लेती हूँ. क्योंकि ये बेसिक सेटिंग्स है जो कि हमने पहले भी की हैं, जिन्होंने पहले लेक्चर मेरा देखा है. they have an idea about they are mandatory. इसी के साथ साथ bottom padding bottom is 45. So layout padding, it's top, the padding top px. After that we are going to implement here the layout पे implement कर देते हैं. So हमने top पे दोनों implement कर दिया. Orient it's a vertical webkit box direction and the normal flex direction is column. We are going to implement here the flag as well as column. Okay, move on the next. So move on the next, we are going to implement container, then we are going to take it here detail. I think here the paragraph. So we are going to take here top, there's 25 px. Okay, move on next. And then here is the about section, then about and then tail box, then for horizontal rule. So यहाँ पर some settings, margin and 0, and implement. To take here the border is not 1.5 px. Implement it's 1 to 5. So background color we are going to take here. Now guys, यहाँ पर preview आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हमने obviously font टाइप किया है. असल में हमें पिक्चर लगानी थी, तो हम पिक्चर का डायरेक्ट लिंक पहले यहाँ पर गेट कर लेते हैं URL के ऊपर, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड सम. यहाँ पर मुझे एक पिक्चर HD के अंदर ऐड करनी है. कोशिश कीजिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू शेयर द रिजल्ट. भी आपको यहाँ देखो बटन भी दिख रहा होगा. ठीक है, गोइंग टू क्रिएट. सब आगे. So move on the next, another. So about section. After that here the about container.
डिटेल बॉक्स, सो यहाँ पर आके so we are going to think it's 8px 35px. After we're going to implement color, here is we're going to make. After that border implement कर देते हैं 1px LED and then transparent. So इसी के साथ implement here 35p. Implement here the font color. There. Margin हमें रखने हैं 32. Next here is bucket. Bucket box. So here is like इसको लिख दे. Sorry, I just forgot the shadow. So we implement here again px 0 and then RGB A. Here some color combination. First one is 174. Third 5 then 0. Okay. So move on the next is so again box shadow simple. So 0, get this, and we are going to console. Okay. Move on the next. Other class is about section and about tail box and then here is the background white and the font color and black. Here is class. So guys यहाँ तक इसका प्रीव्यू चेक करते हैं, देन देखते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमारा ऑब्वियसली ये आप हमने किया हुआ है साइड लाइक दैट. ठीक है गाइस, अब मूव चलते हैं. इंडेक्स हियर अनदर क्लास सेक्शन हमने बना लिया. तो यहाँ पर सबसे पहले सेट कर लेंगे. यहाँ पर सेक्शन नेम जस्ट राइट इट सेक्शन. ओके. इसी के साथ साथ देखो नीचे कर कंटेनर फ्लोट. ये साथ साथ implement here then column 10 large 8 on the class container.
ओके, इसी के साथ कॉलम नाइन, कॉलम मीडियम 10। क्रिएट बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, सो वही यहाँ पर इसी के साथ तो ये आसानी रहती है। So another way, so okay, इसी के here another we are going to take, so इसकी जो भी यहाँ पर हम classes, if you provide here the link, आपको ये सभी link यहाँ पर our classes videos, ठीक है जी। so now paragraph, so यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। we are going to back here div आ जाते हैं, and then here another class is box, कंटेनर। साथ साथ डू यू रिमेम्बर हमने ओवल का सीडीएन गेट किया था, तो वहाँ पर हम इसको रन करा देंगे। करने का है तो बहुत ध्यान से ओवल on the next, here is the item class, so item take here the box class, so again the image box to take here the image, तो यहाँ पर मुझे पिक्चर ऐड करनी होंगी। to provide alter tags otherwise on you, इसी के क्लास इम्प्लीमेंट कर देते हैं। so here course alter and close your button h2, and again implement here the outside, so implement here another box, so here is create here the item, ओके तो गाइस ऊपर से कॉपी कर सकते हैं सिंपल इसको आइटम से, तो हम यही करते हैं, आइटम से कॉपी कर लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर आएगा है वहाँ तक, आप इसको we're going to take it here,
So simple ऊपर देखिए ले आइटम्स है कंट्रोल C फॉर कॉपी पड़े आप बॉटम पर आए हो यहाँ पर यू कैन पेस्ट इट है okay so we are going to take here the third one okay इसके बाद guys we are going to take यहाँ पर जस्ट मुझे क्लास इम्प्लीमेंट करनी है क्लास नेम BTN box enter here साथ साथ एंकर टैग को हम एक कर देंगे and then here okay move on the next now इस क्लास का सेक्शन भी यहाँ पर हमारा वाइन पर हम यहाँ ब्लॉक सेक्शन यहाँ पास कर देते ताकि हमें याद रहे कि हमें यहाँ पर अपना डिज़ाइन करना ठीक है ऑन दिस ये से हम क्लासेस कर सकते हैं क्लासेस सेक्शन यहाँ पर अगेन जो है वो फर्दर मोर कंटिन्यू करते हैं क्लास सेक्शन यहाँ पर चले we are going to implement color and after that we are going to implement position and take a move on the next अब हमने जो कुछ क्लास सेक्शन पे so here is क्लास सेक्शन इसी के साथ साथ हम हमने डेफ रखा था okay. so यहाँ पर है इसकी unset okay move on the next so here is the class section class box container okay move on पता है box again display ms flags and after that we are going to implement ms flags ms flags wrap जो कि है wrap इसी के साथ flags wrap again it's wrap so in top is 45 WebKit centered ms so here is the back and implement here the centered so and as well as next is a class section and then container so यहाँ पे सबसे पहले गाइड position is a relative move on the next there is class section and then class box container made here the box and then image box and next is a position is relative it is 75
and implement here the background color is black. Then image box, and then so यहाँ पड़ेगा, पहले मैं इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. Okay, implement here is 100%. Here is direction, box container, box, then image box, and then detail box. So implement here again display, display is ms flags, display is flag. After that, the and then a line item is the width 100%, is 100%, px, then 0. Implement here the border radius x, position out, so top 0, and then left is 0. So move, here is the class section, then class box container, then box. After that, here the detail, is x, that margin left is 5px. This class, so box container, an image, then detail box. So here is the margin 0, transform as this, color become white, so font is bold. We implement here the line height as well as 55 pixels. अभी pictures कभी preview obviously font color हमारा नहीं, margin left is 15px. Class section. After that, implement here the class box container, here is the class box container. After that, implement here the box, so b and box हमने बनाया था. Again implement
display, so display and flags, and then margin top is 30. Let's move on the next. And one, then btn box. So सबसे पहले display align block. So after that we are going to implement here the padding is 10 px and then px, and here the bar is back. So implement again the border and px, and then so implement here the radius is 30 pen. Implement here the font color is so class box container, then bt, and implement here the whole. So implement here the background color, and then implement here font color. So इसी के साथ one another. So class section, and then it oval carousel. यहाँ पर जो मैं क्लासेस कॉल कर रही हूँ गाइस ऑलरेडी वो क्या है उसके अंदर मौजूद है, बस यहाँ पर कुछ सेटिंग मुझे अपने हिसाब से, तो मैं इनके टैग जो है वो यहाँ पर ओपन कर रही हूँ. पिछली क्लास display here ms okay, WebKit orient legal box direction is a word. So column, इसी के साथ साथ flags direction column reverse ही कर. One thing I do here is the WebKit box align as and ms flag is entered. Here is the align item. After that implement here the padding is 0 and 10 px, here top 55 px, and it is absolute that we're going to take here the top is 50%. get कर देती हूँ. इसी के साथ 35 and then so here WebKit transform
ट्रांसफॉर्म ऑन दी वाई एक्सेस 100%। तो सिमिलर आएगा नीचे वाले के लिए भी सिंपल आप तो हेयर इज ट्रांसलेट ऑन वाई 100%। ठीक है जी। सो हेयर इज अनदर क्लास सेम क्लास मैंने पहले लग। सो यहाँ पर मुझे ओवल प्रीवियस, ठीक है, लिंक हमने अटैच उसके अंदर ही अटैच, और मुझे इसको अपने हिसाब से सेट करना है, तो इसलिए मैं कॉल करा रही हूँ एंड carousel and nav and then oval के साथ प्रीव्यू बाद हम यहाँ पर प्रीवियस एंड move on the call। सबसे पहले implement here the background color के साथ साथ background repeat is no repeat and then background position is background size is duration cut line we are going to implement outline and then merger and then zip। so move on the another class is a class section the same भी रहेगा क्योंकि मुझे इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सिमिलर ही रहेगी जो कि हमने बनाई है को ही आप। so मैं यहाँ क्लास को कॉपी कर लेती हूँ, बार बार टाइम जो है वो सेव हो जाए। so now simple widget here some hover effect। so यहाँ पर स्टूडियो में होवर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। so यहाँ पर background color another class and oval carousel then oval preview। so here is the width height 5px and then implement here the background next और previous की लेनी है। so simple हम उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे अभी ही। so here is the preview theme on the next class। C class को we are going to implement here। तो एक ठीक है, यहाँ पर इसकी ग्रे पिक्चर जो कि हमने सेव करके रखी हुई है उसको हम यहाँ पर हैव एन आइडिया। अभी यहाँ पर मुझे इसको होवर करना होगा। so move on the next same यहाँ पर
मुझे नेक्स्ट कर देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं नेक्स्ट के पिक्चर ऐड कर लूँ। सो हम 50 px कर देते हैं। So URL के अंदर okay, here is and here the next over यहाँ that जो हमने next के पिक्चर में next ग्रे हमारे पर आते हैं। So move on. Here is the class section, then oval carousel and oval nav, then oval next. Implement here the width 50%, height is 50 px. After that implement here the अच्छा I think we are going to so मैंने ऊपर कॉपी कर दी है ऑलरेडी। ओके फाइन। तो यहाँ तक गाइज हमने पिक्चर्स गेट करनी है। सो अब हम अपने प्रीव्यू के साइड पे बढ़ते हैं। जो पिक्चर्स हमारी रह गई थी इन क्लास सेक्शन हम उन पिक्चर्स को यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं 1 बाय 1। दैन फिर हम फर्दर हमारे ब्लॉग को क्रिएट करेंगे। सो गाइज इसका प्रीव्यू देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारा जो क्लास का सेक्शन है वो किस तरीके से प्रीव्यू कर रहा है। So we are going to implement here the rebel in the file for explorer और इसको रन करा के चेक करते हैं। ओके रिजल्ट क्योंकि अभी डिस्प्ले नहीं होगा गाइस, देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं आ। रीज़न इज़ दैट क्योंकि हमने कैरोसेल स्लाइडर लिया है। जब तक हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सम कोड ऐड नहीं करेंगे जब तक हमारा कैरोसेल काम नहीं करेगा। सो बॉटम पर आते हैं और सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं ताकि हमने जो पिक्चर्स के लिंक लिए हैं वो ऑटोमेटिकली रन हो जाए। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉटम पे ही आके HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का पहले कैरोसेल का लिंक प्रोवाइड करते हैं ताकि फर्दर मोर हम इसको आगे गो थ्रू कर सकें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पर ओवल स्क्रिप्ट पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर मैं गाइस ओके ठीक है यहाँ पर इस क्राइटेरिया के अंदर इसी के नीचे हम यहाँ पर कुछ डेटा कॉल करेंगे, कुछ फंक्शंस क्रिएट करेंगे ताकि अगर आप चाहें तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं या आप जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। फ़िलहाल हम यही कॉल कर लेते हैं। सो ओवल कैरोसेल आसानी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सारे कैरोसेल्स के नेम वगैरह मेंशन हुए हुए आ जाएंगे। दैट्स वाई मैं इसको इसी के अंदर ही गेट कर लेती हूँ। अच्छा यहाँ से मैं स्क्रिप्ट एंड में नीचे ले जाऊँगी। रीज़न इज़ दैट क्योंकि अभी मुझे आसानी से क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये देखें इस वजह से मैं इसको नीचे लेकर नहीं जा रही। तो here is and then curly bracket and bottom पर लेकर आ जाए। सबसे पहले we are going to write it here the loop true। okay now close it here। अगर चाहें तो आप सिंटैक्स कॉपी कर सकते हैं इनकी और फर्दर मोर वेबसाइट के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करनी है। दैट्स वाई मैं इसको खुद राइट डाउन कर रही हूँ। 10 and then here's the nav is true। इसी के साथ साथ nav text here is the next autoplay is true and then autoplay hover then pause then true। okay move on the next। here is the responsive so यहाँ पर गाइस 1 by 1 हमें लूप चलाना है।
item zero पे. Okay, here is we are going to write it here, the item 1. So इसी के साथ हम इसको क्लोज कर देंगे इस फंक्शन को. Move on the next. Here is the 600. I close it here. So here is item 2. So item 1, then item 2. इसी के साथ साथ again comma here. Move on the 1000. So again implement here the item 2. So now we are going to close it here like this one. अच्छा, इसी के साथ एक और फंक्शन क्रिएट करूँगी मैं ओवल कैरोसेल का. सो यहाँ पर चाहे तो इसी को कॉपी कर लें, सेम प्रोसीजर है. सो इसी को कॉपी कर लेते हैं. इसके बाद आ जाइएगा, थोड़ी सी चेंजेस कर ली है, उस चेंजेस को हम देख लेते हैं. सो हियर इज क्लास 1. ओके, सेम लाइक दैट. सो लूप को ट्रू ही रखिएगा. यहाँ पर मार्जिन को मैं 25 कर देती हूँ. इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट, ऑटो प्लेस ट्रू. रिस्पॉन्सिव के अंदर item 1 एंड देन 600 पे अगेन item 2 एंड देन 1000 पे भी item 2. अब सिंपल करना है क्या है, जो स्क्रिप्ट का टैग है ना गाइस ऊपर, दिस वन, उसको मैं यहाँ से कंट्रोल X से कट कर लेती हूँ, क्योंकि क्लासेस का था इशू, मुझे लिखना पड़ती है, कॉल करना पड़ती, तो मेरा फंक्शन ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो गया. ओके, सेम लाइक दैट. अभी यहाँ पर आपका कैरोसेल जो है वो ऑब्वियसली डल हो गया. अब रन कराते हैं इसके कैरोसेल को और देखते हैं कि रिजल्ट क्या है. तो कोड पेस्ट करने के बाद गई, अब यहाँ पर जो मेन प्रोसीजर है वो आपकी पिक्चर्स गेट करना है. तो हम सिंपल आते हैं, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएं, आप वहाँ से आप पिक्चर गेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले पिक्चर ले लेते हैं. सो हियर इज ऑब्वियसली स्लाइडर. यहाँ पर हम पहली पिक्चर का लिंक कॉपी कर लेते हैं. So we are going to take here some boxer images. We are going to take from the Google. So पहले तो ये कॉपी इमेज कर लेते हैं. सॉरी, कॉपी इमेज लिंक. आप चाहें तो जिस तरह से मैंने डाउनलोड भी किया है, तो मैंने दोनों प्रोसीजर आपको गाइड कर दिए हैं. If you want to get, so if you want to get in a link wise, तो link wise भी ले लें. अदरवाइज़ आप जो है वो डायरेक्टली पेस्ट करना चाहें तो भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. सो मूव ऑन द नेक्स्ट. ओके, दिस वन, यहाँ से कॉपी इमेज लाइन, देन बैक ऑन सोर्स को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं. सो टेक केयर द थर्ड वन. डिपेंड ऑन यू, जितने भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं. Okay, here is copy image line. Then here is a third one. So यहाँ पर आ जाते हैं. And then we are working on the fourth one. We are going to take this copy image link and then यहाँ पर आप चाहें तो गाइस वीडियो के URL प्रोवाइड करना चाहें. इफ़ यू हैव ऑफिशियल पेज तो वहाँ पर आप यूट्यूब के ऑफिशियल जो है वो लिंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट. सो उसको रन कराते हैं. सो हमारा जो है क्लासेस का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया. बस हमारे पास 2 सेक्शन रहेंगे और आज के ट्यूटोरियल्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. सो नाउ यू कैन सी हियर इज द इफेक्टिव वे. ओके,
नाउ यू कैन सी। अच्छा, आप चाहे तो इनकी लेंथ एंड हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अदरवाइज स्लाइडर इज मूविंग, आप क्लियरली गो थ्रू कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइज कि आप जो भी इसकी लिंक्स लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। नाउ गाइज मूव ऑन द ब्लॉक सेक्शन, और यहाँ पर अगैन वी आर गोइंग टू क्रिएट सम सेक्शन हेयर। सो सेक्शन बना लेते हैं, और सेक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर द क्लास। सो क्योंकि ब्लॉक का सेक्शन है तो इसी क्लास का नाम भी हम ब्लॉक रख देते हैं, और आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी रहती है इसलिए। एंड अदर क्लास इस लेआउट पैडिंग हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। इसी के साथ साथ हम आते हैं कंटेनर फ्लूट की क्लास पे। आई क्लोज द कैप्स लॉक। So here is the container flute class. So create here the row. After that we are going to create here the column medium tan. इसी के साथ साथ मैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर देती हूँ, like this one. So move on the next. Here is हेडिंग कंटेनर की क्लास बना लेते हैं, और इसकी सेटिंग हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। ओके, तो इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू टेक हियर द h2, और h2 के अंदर हम लेटेस्ट ब्लॉग की हेडिंग डाल देते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द पैराग्राफ, और पैराग्राफ में फ़िलहाल हम लॉरम लेते हैं, दैन फिर हम इसको थोड़ा सा एडिट कर देंगे। ठीक है गाइस, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। इसी के साथ साथ हम जो है वो डिव से बाहर आ जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू आउट फ्रॉम द 3 divs। सो डिव्स का बहुत ख्याल रखना, मैंने बहुत दफ़ा बताया है। नाउ क्रिएट हियर अनदर रो क्लास, और इसके अंदर अगैन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द कॉलम empty and then 6। इसी के साथ साथ गए इसमें पैडिंग लेफ्ट 0 कर देते हैं, और नीचे आ जाते हैं। इसी के अंदर हम लोग बॉक्स B1 की क्लास क्रिएट कर लेते हैं। मतलब सिंपल पहले बॉक्स की कर लेती हूँ, फिर इसी के साथ में एक और B1 की क्लास ऐड ऑन कर देती हूँ। इसी के साथ हम इमेज बॉक्स की क्लास ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इमेज का सोर्स गेट कर लेंगे। So in the end we are going to provide some pictures here. आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज हम बिल्कुल आखिर में जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे दैन वी आर गोइंग टू ऐड हियर इमेजेस। इसी के साथ गए इस डिप से बाहर आ जाएंगे हम इमेज बॉक्स के, एंड दैन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर अनदर रो। सो हियर इज अनदर कॉलम। यहाँ पर हम लार्ज गेट करेंगे, और यहाँ पर मैं लार्ज कॉलम को 8 दे देती हूँ। इसी के साथ साथ मैं कॉलम मीडियम 10 ले लूँगी, एंड देन मार्जिन लेफ्ट बिकम ऑटो। ठीक है गाइस, इसी के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द डिटेल बॉक्स। ये बहुत दफ़ा बनाया हुआ है, और इसकी क्लास भी हमने बना के सेव की हुई है। इसी के साथ साथ गाइस मैं यहाँ पर एक क्लास लूँगी जिसका नाम मैं इमेज डेट रख देती हूँ, image date। ठीक है जी। so here is you can write it here the date h2, I just write here 17 January। okay, and then out from, बल्कि मैं h2 बहुत बड़ी हो जाएगी, I am gonna change it h6। okay, और इन दोनों के बीच में मैं br फॉर दी ब्रेक लाइन का ब्रेक रूलर का दे देती हूँ, और h6 के बाद डिव के बाद यहाँ वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर h3। h3 में हम यहाँ पर जो भी ब्लॉगर्स हैं या जो भी ब्लॉग राइट डाउन करें उनके नेम यहाँ पर दे देते हैं। बॉक्स डैनियल randomly
और देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू जो भी ब्लॉग में हमने राइट डाउन किया होगा उसको आप यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, ठीक है जी। इसी के साथ वी आर गोइंग टू आउटसाइड फ्रॉम द पैराग्राफ एंड देन टेक हियर द एंकर टैग, और यहाँ पर फिलहाल हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक हियर द रीड मोर लाइक दिस वन। ओके, नाउ मूव ऑन द आउटसाइड। अब सिंपल आपने डिव से बाहर आना है, तो हियर इज़ 1 2 3 4 एंड 5। मैंने बहुत ध्यान से बता दिया, आपने भी यही सेम मेथड करना। अब गाइज यहाँ पर क्रिएट हियर अनदर कॉलम मीडियम 6 एंड देन पैडिंग राइट इक्वल्स टू 0। बल्कि मैं पहले कॉलम की क्लास बना लेती हूँ। ओके, एंड देन मैं इसी के साथ ही PR फॉर पैडिंग 0 इम्प्लीमेंट कर दूँगी, ठीक है जी। सो आफ्टर दैट आउटसाइड बॉक्स पर आते हैं एंड देन यहाँ पर B2 तो ये रिमेंबर हमने क्लास बनाई थी। इसी के साथ साथ अगेन image box की class. After that you can add it here the image source. If you want to take the copy from the outside on the upside तो आप वो भी ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको write down ही कर रही हूँ। Now I just close it here. Okay, so div से बाहर आ जाएंगे and then create here another row. इसी के साथ साथ यहाँ पर हम कॉलम लार्ज 8 ओपन करेंगे और फिर हमने जो ऊपर किया था सेम वही प्रोसीजर्स यहाँ पर हम ओपन कर देंगे। सो कॉलम MD 10 एंड देन मार्जिन राइट इक्वल्स टू ऑटो। ओके, आप अगैन इस डिव से बाहर आ जाएं, दैन यू कैन क्रिएट हियर द डिटेल बॉक्स। अब जितनी पिक्चर्स आपने लेनी है गाइस आप उतनी ही जो है वो डिव क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। ओके, इसी के साथ साथ अगैन इमेज डेट सेम प्रोसीजर एंड यू कैन टेक इट हियर अगैन H6। तो यहाँ पर 12 again implement here the BR and then March। इसी के साथ साथ H6 से बाहर आ जाएंगे आप and then you can also outside from the div and take here the H3। अब मैं यहाँ पर बॉक्सर मैथ्यू जेम्स, ठीक है जी। इसी के साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट। फर्दर मोर यू आर गोइंग टू टेक इट हियर द पैराग्राफ अगैन एंड देन वही पैराग्राफ जो भी आप इनके बारे में कमेंट्स लेना चाहें देन यू कैन टेक इट हियर। सो पैराग्राफ से बाहर आ जाने के बाद गाइज आप सिंपल एंकर टैग ले लेंगे इसी डिव में रहते हुए। सो आई जस्ट पिक हियर एंकर टैग एंड देन फिलहाल इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड हियर सम सोर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर रीड मोर राइट डाउन करें। ओके, इसी के साथ साथ एंकर टैग को क्लोज कर देंगे एंड अगैन वही जिस तरह से मैंने कहा था यू कैन गो आउट फ्रॉम द डिव। सिंपल अब मैं यहाँ पर सारे डिव क्लोज कर रही हूँ। आई थिंक 2 बहुत है हमारे लिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज इट हेयर। तो गाइस इसके बाद हम यूज़ करेंगे क्लाइंट सेक्शन। तो यहाँ मैं कमेंट पास कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारा है क्लाइंट सेक्शन, उसके बाद सिंपल, फिर वी आर वर्किंग ऑन द फुटर, ठीक है जी। तो मूव ऑन दी CSS। तो गाइस यहाँ पर हम लोग जो है वो सिंपल एक कमेंट पास कर देते हैं फॉर द ब्लॉग व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर। सो यहाँ पर हम ब्लॉग सेक्शन को राइट डाउन कर देते। सो वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द ब्लॉग और फर्दर मोर आगे बढ़ते हैं। देन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द ब्लॉग सेक्शन। सिंपल हमने बना के रखा हुआ है, फॉन्ट कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं फॉर द वाइट
और इसी के साथ साथ ओवरफ्लो on the x-axis we are going to implement on the header. ठीक है जी. Furthermore we are going to working on the block section में हमने क्लास बनाई है बॉक्स की और यहाँ पर सिंपल we are going to take here the margin is 45 px. After that 0. इसी के साथ साथ background color we are going to implement here. Okay, move on the next. Here is the block section and then box. इसी के साथ guys we are going to implement here the image box. After that we are working on it, the position is relative. So move on the next is a block section, then box, and then image box. After that the image inside the box जो कि हमने लेनी है उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं. It's 100%. Okay, now move on the next. इसी के साथ साथ guys we are going to move on the another setting is a block section and then box. और इसी के साथ साथ we are going to implement here detail box. ठीक है guys, and यहाँ पर again we are going to implement the position relative. After that we are going to implement here the padding top is 75 px. After that we are going to implement here the padding bottom is 35 px. Okay, move on the next. Here is another is a block section, then box, and then after that we are going to implement here the detail box again. और do you remember हमने एक इमेज डेट बनाई थी, हम उसको यहाँ पर कॉल कर देंगे. सबसे पहले here is the position is absolute. After that left is 0. Furthermore we are going to implement here the top again 0. So after that we are going to implement here the width is 75 px, height as well 75 px. We are going to implement here the border radius is 100%, and then text align is centered. After that we are going to implement here the background color. Implement here the background color is we are going to implement our relevant code क्योंकि अभी तक हम लेते हुए आ रहे थे. color become white font. इसी के साथ साथ display you know very well, so display is AppKit box again, display ms flags, and after that display is flags. ठीक है guys, इसी के साथ साथ move on the next WebKit box pack is centered. After that we are going to implement here ms flags pack centered, and after that we are going to implement justify content center. इसी के साथ साथ WebKit box align centered, and then ms flags align. So here is the ms flags align as well as centered, and after that we are going to implement here the align item is centered. Okay, move on the next, the WebKit transform. We are going to take care of the translate on x-axis. I think not on the x, we are going to take in the y-axis. Okay, y-axis पे गाइस हम -50% रखेंगे और सेम यही ट्रांसफॉर्म नीचे इम्प्लीमेंट कर देंगे.
तो सिंपल मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लेके ट्रांसलेट ऑन y and then implement here -50%. Okay, remove another paragraph. Okay, fine. So move on the next class is block section, then box, then detail box. इसी के साथ साथ image date के अंदर we are going to create here the h6 for the heading. So margin में guys इसके फिलहाल 0 रखते हैं, otherwise we are going to implement after. फिर हम देख लेंगे we are going to change some things, तो हम आसानी से चीज़ों को चेंज कर लेंगे, जिसमें से हमने previous lectures में भी बहुत दफ़ा किया है. So block section के बाद I am going to text here the box. After that we are going to implement here detail box. इसी के साथ साथ h3. So here is the font weighted is bold. Block section, then box, then detail box, and then anchor. इसी के साथ साथ display online block. Implement here the padding is 8px and then 25px. इसी के साथ साथ implement here the background color is black. After that we are going to implement here the border 1px solid, and then we are going to take here the transparent. इसी के साथ साथ guys implement here the border radius. So border radius is the 35px. इसी के साथ साथ color implement कर देते हैं white for the font color. After that margin top. So margin top is 35px. Move on the next. So move on another class. So यहाँ पर हम लेते हैं again block section, then box. Here is the detail box, and then anchor में हम hover implement कर देते हैं. So here is the background color is white. Okay, move on the next. After that we अच्छा इसी के साथ मैं font color भी दे देती हूँ. जब हम hover करें तो हमारा जो font color है वो black में convert हो जाएगा. ठीक है guys. Okay, move on the next. Here is the block section, and then हमने एक class बनाई थी box b1. So मैं check कर लेती हूँ क्या इशू है. So box b1. Okay, again we are going to take it here the detail box. इसके अंदर guys we are going to implement here some padding on the right is 35px. Okay, move on the next. There is again block section, then box here. So यहाँ पर b2 की क्लास हमारे पास आ गई. Let me check. b1. Okay, b2. So इसी के साथ साथ we are going to take here the detail box. सेम वही मेथड है. पैडिंग राइट दी थी, अब यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट कर देंगे जो कि सेम रहेगी 35px. ठीक है गाइस. इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट. So next class we are going to implement here again the block section. After that box b2. Then we are going to implement here some hover. So b2 के बाद again we are going to take here the detail box.
here is the detail box, and then image det. Implement here on the left side is 35 px. So पिक्चर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू शेयर द फाइनल रिजल्ट. फिर हम बनाएंगे क्लाइंट सेक्शन, और फिर हमारे पास एक या दो सेक्शन रहेंगे. फिर आज हम इसका लास्ट सेक्शन कंप्लीट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू शेयर विद यू द फाइनल रिजल्ट. सो गाइस, यहाँ पर हम एक ऑफिशियल वेबसाइट हमने लॉगिन की और यहाँ से हम कुछ पिक्चर्स के लिंक सोर्स गेट करेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है. लाइक दिस वन, कॉपी इमेज लिंक एंड देन बैक ऑन दी HTML. तो यहाँ पर अपनी पहली पिक्चर को मार्क करते हैं. सेम लाइक दैट, इस तरह से बहुत दफ़ा बताया हाउ टू कॉपी CDN, सो आप लोगों को पता होगा. इसी के साथ साथ मूव ऑन अनदर इमेज. आई थिंक दिस वन इज़ नाइस. यहाँ से अगेन कॉपी इमेज लिंक करते हैं, दैन बैक ऑन आवर वर्क, और हम जहाँ पर सेकेंड इमेज रिक्वायर्ड है वहाँ ले जाके उसको पेस्ट कर देते हैं. सो ये हमारा ब्लॉक सेक्शन कंप्लीट हो गया. इसको रन करा के आपको चेक कराते हैं, दैन फिर हम बढ़ते हैं अपने क्लाइंट सेक्शन की साइड पे. सो यहाँ तक हमारी वेबसाइट चल रही थी और एवरीथिंग इज़ ऑन वर्किंग, आप देख सकते हैं. इसी के साथ साथ अबाउट था, क्लासेस के अंदर हमने जो है वो स्लाइडर्स बनाए थे. इफ़ यू वांट टू टेक तो आप आसानी से और स्लाइडर्स ऐड कर सकते हैं. इसी के साथ साथ लेटेस्ट ब्लॉग का एरिया आपके सामने बन चुका है, आप देख सकते हैं. और ये डेट्स के साथ सिंपल हमने कुछ टैग्स यहाँ पर ऐड ऑन किया है. तो इसके लेफ़्ट पर और उसके राइट पर अगर आप चाहें तो दोनों को इक्वली एडजस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने खुद इसके लेफ़्ट और इसके राइट के ऊपर टैक्स को दिया है. सो मूव ऑन दी अनदर सेक्शन इज़ अ क्लाइंट सेक्शन. अब हम बढ़ते हैं अपने क्लाइंट सेक्शन की साइड पे एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर क्लाइंट सेक्शन. सो okay, here is the client section R. So move on the again create here some sections. Okay, so move on the another. So furthermore यहाँ पे class create कर देते हैं. It's a client section. Okay, इसी के साथ साथ we are going to add here the layout padding. आई थिंक हम यहाँ पर लेआउट पैडिंग बॉटम यूज़ कर लेते हैं. इसी के साथ नीचे आते हैं एंड देन क्रिएट हियर द कंटेनर फ्लोट. सो वी आर गोइंग टू टेक इट हियर कंटेनर फ्लोट. इसी के साथ साथ क्रिएट हियर द रो एंड देन क्रिएट हियर कॉलम मीडियम 10. और इसी के अंदर वी आर गोइंग टू टेक इट हेयर द कॉलम लार्ज 8. सो मैं इसको मैं आई थिंक इसको मार्जिन ऑन एक्स एक्सेस इसको ऑटो कर देती हूँ. ठीक है गाइस, इसी के साथ हम यहाँ पर क्लाइंट कंटेनर ले लेंगे. क्लाइंट कंटेनर. इसी के साथ साथ अगेन वी आर गोइंग टू टेक इट हियर द हेडिंग. हेडिंग कंटेनर. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक इट हियर द H2. सो इम्प्लीमेंट हियर. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, What's our students feedback? What are trainers? ये अच्छा लगेगा. Okay, feedbacks. सो क्लाइंट के सेक्शन के अंदर नॉर्मली आप रिस्पॉन्सेस जो है वो गेट करते हैं. ओके, इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट गो आउटसाइड फ्रॉम द पैराग्राफ एंड देन div. So here is another is name is the client box and then container. Enter this class again the carousel wrap
if we are going to take here the carousel, उसमें हमने पहले भी दिया था. Here is the oval carousel. तो सेटिंग आपने की भी है ऑलरेडी, बस सिंपल आप उसको कॉल करा देंगे. Here is the item. After that you can take it here the box, then again image box, and then you can take it here the image source, and then implement here the alter tags. पिक्चर हम इन दी एंड में गेट कर देंगे, इसी के साथ इस डिव से बाहर आ जाएंगे. एंड देन यू कैन टेक इट हियर द डिटेल बॉक्स क्लास. सेम प्रोसीजर है गाइस, सिमिलर जो कि मैंने लास्ट लेक्चर्स पे आप लोगों को क्लियर करवाए. सो डिटेल बॉक्स, इसी के अंदर टेक हियर द H2, बल्कि H4 ले लेते हैं. सो जॉन Mac. Okay, so again he says something, so implement here the paragraph and implement here the lorem ipsum. कुछ भी कमेंट्स करना चाहें तो आप इजीली यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं. तो यहाँ पर मुझे कोटेशंस की पिक्चर लेनी होगी. तो यहाँ पर मैंने इमेजेस के फोल्डर के अंदर कोटेशन का एक PNG फाइल डाउनलोड की हुई है. इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन, आप भी इंटरनेट से इजीली गेट कर सकते हैं. तो आई क्लोज दिस हियर. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू बैक ऑन 3 divs. इसी के साथ अगैन अब फिर वही आइटम से आप कॉपी कर लें और दैन फर्दरमोर आप इसको पेस्ट कर दें. तो अगैन मैं यहाँ से 3 से लेकर आइटम तक कॉपी करूँगी इसको. सो हियर इज़ आवर आइटम. वी आर गोइंग टू सी. ओके, बहुत आगे चले गए थे हम. सो बैक पर आते हैं स्लाइडली सा. हियर इज़ आवर आइटम. जितनी भी आपको स्लाइडर्स रिक्वायर्ड, जितनी आप कॉपी पेस्ट कर जितने आप पिक्चर्स गेट करना चाहते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ हियर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सो यहाँ तक गाइस हमने कुछ पिक्चर्स गेट कर ली कोटेशन की. इफ़ यू वांट टू गिव मोर देन तो आप फर्दर कॉपी कर सकते हैं. सो यहाँ पर गाइस वी आर गोइंग टू पास हियर सम कमेंट्स अबाउट द क्लाइंट. हम क्लाइंट बनाते हैं, सिंपल बैक करते हैं और सिंपल यहाँ पर सबसे पहले क्लास ओपन करते हैं क्लाइंट सेक्शन की. इसमें ऑब्वियसली कलर हम वाइट रख देंगे. ठीक है जी. तो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द फॉन्ट कलर इट्स white. Okay, move on the next. Here is the client section, and then heading container. So here is the WebKit box. WebKit box align is centered. इसी के साथ MS Flex align is centered, but the direction flex align centered. After that here is the align item centered. इसी के साथ साथ we are going to implement here the text align, and last on the list is the margin bottom. It's 45 px. So here is the client section, and after that we are going to implement here the heading. We are going to take here the box. So display WebKit box, again display MS Flexbox. Again display is flex, not the block. Here is flex. Move on the next. So WebKit box orient,
webkit box orient, we are going to take it here to vertical. इसी के साथ साथ if you required guys the source code आप comment में बता सकते हैं. We also provide you. So box direction, so box direction we are going to take it here in a normal, and after that ms flex direction. Here is the column, and again the flex direction, again column. Here is the webkit box align centered, ms flex align, and last on the list is an align item. Centered. Okay, move on the next. Take it here the margin 0 and 10 px. Move on the next. Here is the client section. So after that we are going to take it here the box and then image box. So the pictures हमने ली है उसका पहले box decide कर लेते हैं. Width is 1 to 5 px. After that implement here the border radius is 100%. After that the margin bottom, we're going to take it minus 62 px. Position is relative, and after that we are going to implement here the z index is 2. So move on the next is a client section के अंदर जो पिक्चर लेनी है सिंपल वो हम उसको 100% ही रखेंगे. So client section and then box, we are going to take it here the box. इसी के साथ साथ image box and then image. So after that here is the width, it's 100%. So next here is client section, box, then detail box. Now you can implement here some display webkit box, and again display his ms Flexbox, and then again display is flex. Move on the next. Here is take care the webkit box orient. So webkit box orient is a vertical. After that webkit box direction, webkit box direction is a normal. Again ms flex direction is column, and then again implement here the flex direction as well as column. ये सारी सेटिंग्स गाइस वही है जो हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, और ये सब सेटिंग सिमिलर है. आपको जब भी अलाइन करना है यू कैन इम्प्लीमेंट हेयर ऑन दी 3 कैटेगरीज जिस तरह से हम कर रहे हैं. सो ms flex align centered, and then implement here align item centered. So here is the padding, it's 95 px, then 25 px, 45 px, and again 25 px. इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं गाइस. So 050. Okay, here is the blackish. इसी के साथ साथ move on the next. Line section, then box, then detail box, and then h4. So here is the font weighted को हम कर देते हैं bold.
After that, move on the next. So client section, अब हम आते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर. सो सेम क्लास को कॉल करेंगे एंड देन एच की जगह पे पैराग्राफ राइट डाउन कर देंगे. मार्जिन टॉप रखना चाहती हूँ हेडिंग से, आई थिंक 25 px इट्स ओके. सो मूव ऑन द नेक्स्ट. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द क्लाइंट सेक्शन. Then box, then detail box, and then image. इसी के साथ साथ we are going to implement here the width is 35 px and implement here the margin top is 25 px. After that we are going to take here some carousels working. So here is क्लाइंट सेक्शन पर आ जाती हूँ अगैन मैं. क्लाइंट सेक्शन, दैन ओवल कैरोसेल. मुझे यहाँ पर भी वही कैरोसेल चाहिए जो कि मैंने ऊपर दिया है. ओवल कैरोसेल एंड देन ओवल नैव. क्योंकि क्लास पहले बनी हुई थी डिस्प्ले WebKit box, again display here is, so पहले मैं okay display is MS Flexbox and again display online बल्कि Flex ले लेते हैं. ठीक है. इसी के साथ साथ again WebKit box pack. Centered and again MS Flex pack centered and then justify content as well as centered. After that implement here some paddings. Same वही है जो कि हमने पहले भी दिया था 0 and 10 px. After that we are going to implement here the margin top is 55 px. Move on the next. Here is the client section again. So client section. So here is another oval nav, and then we are going to create here oval previous. इसी के साथ next को copy कर लेंगे. Here's the client section, then oval carousel, then oval nav, so here is the oval nav and then oval next. So again we are going to, अच्छा थोड़ी सी change होगी क्योंकि same class आप implement नहीं कर सकते. So height is 50 px. After that opacity is 1. इसी के साथ साथ background repeat is no repeat. अच्छा सवाल ये आ सकता है कि जो कि हमने ऊपर कैरोसेल में दिया है तो सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पर भी कॉल किया तो क्या ये पोजीशन मिसमैच नहीं होगी. रीज़न इज़ दैट क्योंकि हमने क्लाइंट सेक्शन को मेंशन कर दिया, दैट्स व्हाई. ठीक है जी. अगर आप क्लाइंट सेक्शन को मेंशन कर देते हैं तो फिर वो उसी रेलिवेंट सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर काम करता है. सो बैकग्राउंड साइज अगर आप नहीं करते और अगर आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते तो फिर बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाता है दोनों आपस के अंदर कैरोसेल्स. लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर सेक्शन प्रोवाइड किए हैं और बाकायदा उसके नाम मेंशन किए तो वो उसी सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर ही वर्क करेगा जिसके अंदर आपके रिक्वायरमेंट है. मूव ऑन द नेक्स्ट. हियर इज अगेन द क्लाइंट सेक्शन. So again, so here is oval carousel,
an oval nav, and then oval is previous. Okay, सबसे पहले हम implement here the background image, जिसका URL हम provide कर देते हैं. Images previous arrow in PNG. ठीक है जी. Move on the next. इसी के साथ साथ background color become white. So bucket transform. So translate on x-axis is we are going to tan here minus tan px. Same इसी को copy कर देंगे and then implement here on the अवल के काम करते हैं इसको plus tan कर देते हैं. ठीक है. Again transform. So translate on x-axis and then tan px. इसको पॉजिटिव रखते हैं एंड देन नेक्स्ट को हम लोग जो है वो माइनस रख देंगे. तो सिंपल मैं कुछ नहीं करूँगी, इसी को कॉपी कर लेती हूँ, नीचे पेस्ट कर देती हूँ और देन जहाँ पर प्रीवियस लिया है वहाँ नेक्स्ट कर देंगे. इसी के साथ साथ यहाँ पर भी हम नेक्स्ट एरो ले लेते हैं और प्लस में था तो यहाँ पर इसको हम माइनस में कर देंगे. बस कुछ नहीं करना, कलर चेंज कर देते हैं. प्रीवियस वाला जो है इसको ब्लैक कर देती हूँ. ठीक है जी. और जो नेक्स्ट वाला है वो वाइट हो जाएगा. दोनों में पोजीशनिंग चेंज हो गई है और दोनों प्लस और माइनस के अंदर हमने डिफरेंशिएट प्रोवाइड कर दिया है. सो पिक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं, दैन वी आर गोइंग टू शेयर द फाइनल रिजल्ट. सो आ जाते हैं अपनी पिक्चर्स पे. सो यहाँ पर आकर यहाँ पर हमें पिक्चर लेनी है, हम पिक्चर्स गेट करते हैं. सो पिक्चर्स गेट करते हैं. यहाँ से कुछ पिक्चर्स हम कॉपी कर लेते हैं गाइस रैंडमली. सो कॉपी इमेज लिंक रिजल्ट देख. सो गाइस वन बाय वन हम पिक्चर्स के यूआरएल कॉपी करते रहेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सिंपल कॉपी इमेज लिंक. और बस वन बाय वन जितनी भी आपने पिक्चर्स ली हैं आप अपने हिसाब से उनको ऐड ऑन कर सकते हैं. तो सिंपल मैं यहाँ पर जस्ट लिंक पेस्ट कर रही हूँ. अब आप स्क्वायर में लेना चाहें, सर्कल में लेना चाहें, डिपेंड ऑन यू. फ़िलहाल हमने एक नए मेथड से लिया है स्क्वायर के अंदर. सो जल्दी से हम यहाँ से कॉपी इमेज लिंक कर देते हैं. दैन वी आर गोइंग टू पेस्ट इट द सर्टेन एरियाज. इसके साथ आप जितने भी बनाना चाहें आप सिंपल कॉपी पेस्ट करें. यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल टाइम. तो यहाँ पर हम last on the list copy image link, then paste it here. So guys name tags वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर दीजिएगा. आप सिंपल इसको रन करा के शेयर करते हैं. नाउ इट लुक लाइक दैट. ओके जी, ये आपका स्लाइडर्स आ गए. ये देखिए. अभी यहाँ पर पिक्चर की हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा. मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ क्योंकि मैंने पिक्चर सारी लैंडस्केप में ली है. ये एक पोर्ट्रेट में आ रही है. कॉपी इमेज लिंक. ओके, थर्ड वन वी आर गोइंग टू चेक इट. वन 2 and we are gonna change this image. ये मैंने बाय मिस्टेक है इसको हाइट में ले लिया था. दैट्स इक्वल लेंथ चाहिए सबकी, एडजस्टेबल चाहिए. दैट्स वाई मैंने इनको ये सही नहीं हुई. वन लेट मी चेक ये कौन सी पिक्चर है. चेक कर लेते हैं पहले, दैन फिर उसी को ही चेंज कर देंगे. ओके, मैंने पिक्चर को वापस कर दिया है बाय प्रेसिंग कंट्रोल Z. अब मैं चेक कर लेती हूँ पहले पिक्चर कौन सी है. बाय प्रेसिंग कंट्रोल आप लिंक के ज़रिए चेक कर सकते हैं. इसको पे क्लिक करके ये पिक्चर कौन सी है, आसानी से खुल जाएगी ये पिक्चर.
एंड देन फिर आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सी पिक्चर है जो कि आपके पास लिंक में शो नहीं हो रही। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक मुझे यही लग रही है क्योंकि इसके आगे पोर्ट्रेट लिखा हुआ है। चेक कर लेते हैं फाइनल। सो ओके फाइन, ठीक है गाइस। अभी देखें आप बिल्कुल अलाइनमेंट के ऊपर है क्योंकि पिक्चर हमारी लैंडस्केप के बदले पोर्ट्रेट में आ गई थी। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमारा क्लाइंट का फीडबैक भी कंप्लीट हो गया और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट आपको दिख रही होगी। लास्ट वन द लीज हम फूचर क्रिएट करते हैं, देन कॉन्टैक्ट दोनों को एक साथ ही डिज़ाइन करेंगे। सो बैक ऑन आर VS कोड। सो पार्ट 2 के अंदर गाइज हम आज इस वेबसाइट को कंप्लीट कर देंगे। इफ़ यू रिक्वायर द सोर्स कोड आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, वी ऑल्सो प्रोवाइड यू। सो हियर इज बैक ऑन द लास्ट सेक्शन आर, इसी के अंदर हम 2 सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो हियर इज आर इन्फो सेक्शन, इसमें मैं फूटर और कॉन्टैक्ट को गेट कर दूँगी। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन। सो मूव ऑन हेयर द इन्फो सेक्शन और यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट हेयर द अगेन। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास बना लेती हूँ सेक्शन के बगैर, इन्फो सेक्शन की। ओके, इसी क्लास के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट द कंटेनर फ्लोट। ओके, इसी सेक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द रो। सेक्शन तो गाइस हमने बनाया ही नहीं है फ़िलहाल। कॉलम मीडियम मैं यहाँ पर 10 रख देती हूँ और इसी के साथ साथ मैं मीडियम मार्जिन लेफ्ट इज ऑटो। इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर अनदर रो और इस रो के अंदर हम सिंपल एक और क्लास बना लेते हैं, इन्फो मैन रो की। ठीक है, इस डिफ को नीचे ले जाते हैं एंड देन यू कैन क्रिएट हियर अगेन द कॉलम मीडियम 6 क्लास और इस क्लास के अंदर भी आप पैडिंग राइट 0 कर दें। ठीक है, इसको नीचे ले जाओ। इसी के अंदर ही गाइस हम एक सेक्शन क्रिएट कर देंगे जो कि हमारा कॉन्टैक्ट का सेक्शन होगा। मैं यहाँ कमेंट पास कर देती हूँ ताकि इफ़ यू वांट टू गिव सम चेंजेस तो आप यहाँ के चेंजेस इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अब यहाँ पर सेक्शन बना देते हैं और इस सेक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द क्लास जो कि हमारी है कॉन्टैक्ट सेक्शन। आई नो बहुत सारी क्लासेस हैं क्योंकि कंप्लीट वेब पेज है। सो हमारा जो मेथड है वो कम्प्लीटली आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करने का है। सो रिक्वेस्ट a call back. So after h2 we are going to take here the form. So form action में कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे बाहर आ जाते हैं सिंपल। कुछ डिव्स के अंदर ही ऐड करूँगी इसको सिंपल डिव्स में। ओके, सो जो भी इनपुट लेंगे वी आर गोइंग टू टेक इन अ डिव type tags so here is a placeholder is name. Now you can close it here. इसी के साथ again इस div से बाहर आ जाते हैं, create another div और इस div के अंदर again you can take it here the input type text. So placeholder here is the phone number. Here is phone number. So now close it here
इसी के साथ आप इस div से अगेन बाहर आ जाएंगे एंड देन क्रिएट अनदर div. Sorry, I close the caps lock. और इस div के अंदर you can get here again input type email and again placeholder email. Okay, move on the next. इसी के बाद again guys you can take it here another div. जितने भी आपको फॉर्म की फील्ड्स क्रिएट करनी होंगी आप सिंपल यू कैन मेक डिफरेंट divs और आप उन divs के अंदर इन फील्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं. So input type tags and then placeholder message box. अब यहाँ पर आप text एरिया लेना चाहें so depend on you, आपके ऊपर डिपेंड करता है. so मैं बल्कि इसको सिर्फ मैसेज कर देती हूँ और इसकी क्लास क्रिएट कर देती हूँ जिसकी विड्थ वगैरह मुझे चेक करनी होगी. तो यहाँ पर मैं इसको मैसेज बॉक्स की क्लास होल्ड कर देती हूँ. ठीक है, नाउ आई क्लोज दिस हेयर. इसी के साथ इस div से अगेन बाहर आ जाएंगे एंड देन यू कैन टेक इट हियर अनदर div flex. ओके, सो इसी के अंदर बटन में आप सेंड मेंशन कर दें एंड देन यू कैन आउट फ्रॉम द div एंड देन आल्सो बैक द फॉर्म. ठीक है जी. इसी के साथ गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड सम मैप तो आप यहाँ पर मैप भी दे सकते हैं. तो हम यहाँ पर हम मैप क्रिएट कर लेते हैं. सो मर्जी है देना चाहें दे, इट्स नॉट अ कंपल्सरी. सो बल्कि मैं क्लास बना लेती हूँ मैप कंटेनर के नाम से. हियर इज़ अ मैप कंटेनर. So we added this. Map container. So इसी के अंदर we are going to create here the map class and then you can take it here the Google Map. So यहाँ पर Google Map के अंदर guys मैं स्टाइल्स क्रिएट कर देती हूँ. Here is the width is 100 px. Okay, इसी के साथ implement here the height. px. Okay, now you can close it here. So back on the section. अब इस सेक्शन से अगेन बाहर आएंगे और यहाँ पर आप मार्क कर दें फ़िलहाल यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट जो है वो एंड हो गया. अभी इन्फो कंटिन्यू है. ठीक है, एंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स. इफ़ यू रिमेंबर तो आसानी रहेगी. तो यहाँ पर मैं इसको फुटर स्टार्ट कर देती हूँ. सो हियर इज़ द फुटर बिगिन. ठीक है जी, उसी के अंदर ही चल रहा है सेम लाइक दैट. ओके, थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर देते. सो यहाँ से इंटर करेंगे एंड देन इम्प्लीमेंट हियर द सेक्शन. सेक्शन के बाद यू कैन क्रिएट हियर द क्लास. सो हियर इज द फुटर सेक्शन. अभी सेक्शन को नीचे लेके चले जाएंगे गाइस. यू कैन क्रिएट हियर द सोशल बॉक्स क्लास. रिमेंबर होगा बहुत सारे लोगों को जिन्होंने क्लासेस देखी हैं सोशल बॉक्स में हमेशा हम लोग एंकर क्लासेस में सोशल मीडिया आइकन्स ऐड कर लेते हैं. इफ़ यू हैव पिक्चर्स आप इमेजेस सोर्स कर सकते हैं. हमने अपने पास लेके रखी हुई हैं. सो मैं डायरेक्टली कॉल कर लेती हूँ.
images, Facebook PNG, alter tags. आप चाहें तो इंटरनेट से डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हैं। इसी के साथ यू कैन क्रिएट अनदर एंकर अगैन। अच्छा, मैं इसको नहीं क्रिएट कर रही, ऊपर का कोड जो है उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। भी सोशल मीडिया आइकन गेट करने हैं आपने, हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं। ओके, बस सिंपल, कुछ खास नहीं, सेम वही रखेंगे, बस जो पिक्चर्स है वो ऑटोमेटिकली आप कॉल करते रहेंगे। चलो इट्स ओके। लिंक्डइन, इसी के साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर एक्स्ट्रा। And then last on the list is a YouTube. Okay, after that we are going to back here some paragraphs. So paragraph के अंदर simple, आपको याद होगा हम copyright का मार्क गेट करते हैं। Copy 125, all right reserved. Designed by me. Okay, so इसी के साथ okay fine, we never need any anchor tag फिलहाल। सो पैराग्राफ फिर क्लोज सेक्शन यहाँ क्लोज हो गया। इसी के साथ साथ मुझे बाहर आना पड़ेगा और डिफ हमारे पास हमने क्रिएट किए हुए थे, इसमें हम कुछ क्लासेस बना लेंगे और एक डिफ से बाहर आते हैं गाइस फूटर के बाद। सो यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगी जो कि है कॉलम मीडियम 6 की, और इसके अंदर मैं पैडिंग ऑन एक्स एक्सेस इज 0। ओके, इसी डिफ के अंदर मैं एक इमेज बॉक्स ऐड कर लूँगी। सो इमेज बॉक्स की क्लास बना ली है, और इसी के अंदर गाइस आई एम गोना टेक इट हियर इमेज सोर्स के अंदर हम एक पिक्चर गेट कर लेते हैं। so, मैंने एक पिक्चर गेट कर ली और यहाँ पर सो वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर वेबसाइट। completely close here, so div check कर लें। ओके, सो यहाँ तक एंड हो जाता है गाइस हमारा। अब हम आते हैं अपने CSS पे और फाइनल इसको टच देता है, और जहाँ जहाँ हमने इमेज रिक्वायर्ड थी, खैर फिलहाल हमने वो डायरेक्टली दे दी है। सो हियर इज वी आर गोइंग टू पास हियर कमेंट। इन्फो, अब इन्फो में हमने दोनों ही बना दिए हैं, बस हम डायरेक्टली इसको वर्किंग पे लेते जाएंगे। सबसे पहले इन्फो सेक्शन है। सो इन्फो सेक्शन में सबसे पहले गाइस वेबकिट बॉक्स, वेबकिट बॉक्स अलाइन, एंड इसी के साथ MS फ्लैक्स अलाइन, and after that we are going to implement here the line item flags and move on the next. Here is the info section and then contact section, दोनों को मैं एक साथ ही कॉल करूँगी। सेम प्रॉपर्टी है, पोजीशन इज दोनों के रिलेटिव है, दैट्स वाई। इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट info section and then contact section and H2. So here is the font, made it as bold. Okay, after that we are going to implement here another info section and then
कॉन्टैक्ट सेक्शन में हमने फॉर्म लिया है. So here is the margin top is 45 px. After that, padding right is 35 px, and then margin bottom is again 45 px. Move on the next. Here is the info section again. So ये हमारा लास्ट ही क्राइटेरिया. फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक किस पे लेकर आएंगे, जिस पे हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे. सो हियर इज द विड्थ. आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द बॉर्डर इज नन. इसी के साथ साथ गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द हाइट इज 50 px. जितने भी इनपुट हैं उसकी हाइट. So implement here the margin bottom 25 px among all. So padding left 25 px. After that implement here the background color is black, and then outline is none, and then font color is become white, and then implement here the border radius is 45 px. Okay, move on the next. Here is another info section. After that, contact section. After that, input. So where is the WebKit input place folder like this one. ये सूडो क्लास आपने राइट डाउन करनी है इनपुट के बाद. ठीक है जी. You can call it here. So here is the color. We are going to implement okay. Again सेम क्लास रहेगी. अब MS Flex के ऊपर आपने इसको कॉपी करना है. So info section, input, then MS input placeholder. ठीक है जी. Now again implement here the color जो कि हमने ऊपर प्रोवाइड किया है. This one. Okay, move on the next. Here another. इसको कॉपी कर लेते हैं. There is a pseudo class. Okay. So color और कॉम्बिनेशन सेम रहेगा. इसी के साथ अगेन इन्फो मैं इसी को कॉपी कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर है. बस थोड़ी सी इसमें जो है वो सेटिंग करनी होगी. सिंपल इनपुट के बाद जस्ट प्लेस होल्डर की सूडो क्लास है. ठीक है जी. सो वी आर गोइंग टू चेक इट हियर. ओके फाइन. अदरवाइज कलर वही रहेगा जो कि है. मूव ऑन दी अनदर info section, then contact section, then input dot message box. So here is the implement here the height, क्योंकि हमने उसका मैसेज बॉक्स की हाइट अलग ही रखी थी 135 px, and implement here the border radius for corners को थोड़ा सा रेडियस में लेकर आएंगे 25 px, ताकि वो एक मैसेज बॉक्स की तरह बिहेव करे. Move on the next. Here is the info section, then contact section में हमने यहाँ पर बटन क्रिएट किया. So implement here the border is none. After that, display align block. So implement here the padding
is 12px, then 55px. After that, implement here the background color is become white, and then implement here the border 1px solid, and then transparent. So border radius is 35px, and then font color हम कर देते हैं इसका black. So implement here the margin top is 35px. After that, we are going to take another info class. So info section, and then again contact section. So button and then over. So background color black कर देते हैं. When you take your mouse and the font color हम इसका white कर देते हैं on the opposite. ठीक है जी, like this one. जब माउस लेके जाएंगे तब ये implement होगा. ठीक है जी, move on the info. Info section. And contact section, then map container. इसी के साथ साथ implement here the height is 100%, and then minimum height हम रख देते हैं इसकी 3 to 5px. Move on the next. अच्छा, ये भी डिपेंड करता है. इफ़ यू वांट टू गिव तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इज़ नॉट अ मैंडेटरी कि आप मैप दें. हमने लास्ट अपनी वेबसाइट में नहीं दिया था, तो इसलिए हम यहाँ पर दे रहे हैं. मैप रिस्पॉन्सिव, ये क्लास हम जावास्क्रिप्ट में बना लेंगे अभी. ओके, इसी के साथ अगेन info section, then image box, then image width is 100%, जो कि अभी तक हम लेते आए हैं. So last one the least footer पर आते हैं guys. So here is begin the footer. So here is the footer section again. So here is the margin is 25px and then 0. Move on the next. Here is the footer section, and then social box जो हमने बनाया था social media icons का. So display WebKit box, and again display MS Flexbox. इसी के साथ साथ display online. Okay, inline नहीं बल्कि मैं इसको सॉरी flags ही रखूँगी. Okay, move on the next. So WebKit box align centered. After that, here is the MS flags align as well as centered, and as well as last one they need align item centered. ठीक है जी, move on the next is the footer section, then social boxes के अंदर we are going to create the anchor tag. So we are going to take here the margin right on 15px. After that, here is the footer section, then social box anchor and image. Here is the maximum width is 25, and then maximum height as well as 25px. Okay, move on the next. Here is the footer. Footer section on the paragraph. So margin is 0,
and then implement here the margin top is 25px. After that you can implement here the color. Okay, font color is okay, implement here look like that. इसी के साथ last class is the footer section and anchor. The same the font color again. तो हम अभी वो implement किया है. Here is okay fine. So guys final result देखते हैं इसका और स्क्रिप्ट को थोड़ा सा एडिट करते हैं मैप के. तो यहाँ पर जिस गूगल मैप का हमें जो एक स्क्रिप्ट राइट डाउन करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट हो जाए. तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट हियर. तो यहाँ पर आपको याद रहे हम यहाँ पर गूगल मैप का स्क्रिप्ट ऐड करेंगे. तो ठीक है, थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ जिसका नाम मैं माई मैप रख देती हूँ. छोटा सा फंक्शन है, सिंपल. So variable map prop equals to implement here centered new Google dot maps डॉट जिस पोजीशन को लिखना है उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपने यहाँ पर राइट डाउन करने होता है. सो वो पोजीशन फिर आपके पास गेट हो जाती है. सो जो भी पोजीशन है फिलहाल हम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं. आप वॉट एवर जो भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपका मैप प्रोवाइड करता है डिपेंड ऑन योर लोकेशन क्योंकि गूगल मैप में आ रही होती है. अदरवाइज़ आप चाहें तो डायरेक्टली गूगल मैप का मैप उठा कर भी, क्योंकि हमें अपनी पोजीशन का चाहिए, दैट्स वाई हम उसको गेट करेंगे जो कि रैंडमली है. Here is comma and we are going to take it here the zoom 1/8. Okay, so go outside from here, variable map equals to new Google dot maps dot map. So here is the document dot get element by id और यहाँ पर we are going to call it here the Google map. Google map. It's look like that. You can implement here comma, get the down. So after that map prop close. So यहाँ पर गूगल मैप का जो स्क्रिप्ट था वो हमने राइट डाउन कर दिया. सो गाइस फाइनल रिजल्ट को गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या कह रहा है. और हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर मैप वगैरह हमने एडिट कर दिया था आपके सामने यूजिंग अ स्क्रिप्ट. So here is the final result of our Boxer website and it's a very interesting and amazing. आप देख सकते हैं बहुत ही interesting and effective way है. Each and everything is on working. So everything is on working. जितने भी carousels थे, जितने भी sliders थे, they all are working in a way effective way के अंदर. हर चीज़ responsive है और everything is on working back and front. आप देख सकते हैं. सो बहुत इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर हमने जो होवर इफेक्ट दिया है. इसी के साथ साथ यहाँ पर आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर कंप्लीट आपका मैप भी यहाँ पर शो हो रहा है और आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए और आप इसको फुल स्क्रीन पे भी लेके जा सकते हैं. सो आई होप गाइस आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा. लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.